This conference will now be recorded. Ali, Madad Rasan, Ya Ali, Mushkil Asan, Ya Ali, Madad Rasan, Ya Ali, Mushkil Asan, Ya Ali, Madad Rasan, Ya Ali, मुश्किल आसान या अली मदद रसान या अली 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 मुश्किल आसान या अली
मदद रसान या अली, मुश्किल आसान या अली, 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 मदद रसान या अली। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। या अली मदद अजीज सर। या अली मदद, या अली मदद अजीज या अली मदद सर। या अली मदद, या अली मदद। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूब। कामड़े साहब, आप डिस्प्ले करेंगे? जी सर। हम मौला के मुबारक नाम से आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम, हाजिर इमाम। या मौलाए मेहरबान मदद फरमा, अल हय्युल कय्यूम, अली अल्लाह मदद फरमा। या मौला, या मौला, तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी मौला, तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी मौला। या मौला मेहरबान मदद, मदद मौला मदद। अल हय्युल कय्यूम, अली अल्लाह मदद फरमा, अल हय्युल कय्यूम, अली अल्लाह मदद फरमा, अल हय्युल कय्यूम, अली अल्लाह मदद फरमा, अल हय्युल कय्यूम, अली अल्लाह मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान, या मौलाए मेहरबान मदद मौला। आज हम फरमान नंबर 43 को पढ़ने से कबल फरमान नंबर 42 के आखिरी एक पैराग्राफ की तरफ चलेंगे, जो हम पिछले हफ्ते पढ़ रहे थे। और वहां पर जो दो की प्रिंसिपल थे, उसको हम एक बार दोबारा से कवर करते हैं, so we can see the same principle in the फरमान नंबर 43। आपको याद होगा कि फरमान नंबर 42 की बिगिनिंग में इमाम हमें दो मिसालें बयान फरमाते हैं। At the beginning of फरमान नंबर 42, Imam had talked about two examples. One, that we are not Hindus and our tariqah is Ismaili. Second, that we should not follow the Ishnashri and we should not be sad in the month of Muharram, and we should not observe Muharram as we are with
the Imam Zaman. With the Imam Zaman. In this last paragraph, Imam is giving us what is Sirat al-Mustaqim. What is Sirat al-Mustaqim? We always read and we always say in our dua, the Ya Mola, हमें सिरात al-Mustaqim पर कायम और दायम रखना, हमें सिरात al-Mustaqim पर हिदायत करना. ऐदिना सिरात al-Mustaqim. Imam is asking question, what is Sirat al-Mustaqim? Sirat al-Mustaqim, in the word, just a straight path. But in our tariqa, in the manvi mane, the essence of Sirat al-Mustaqim and our tariqa is the path on which Imam has guided us on. Sirat al-Mustaqim क्या है हमारे तरीके में? वो तरीका जिसके ऊपर इमाम ने हमें गाइड किया है, जिस पर हमें फरमान फरमाया है, जिस पर हमें तवज्जो दिलाई है. And Imam gives example that there are two sides on the Sirat al-Mustaqim. If you go a little bit to the right, you will fall into the valley. अगर आप थोड़ा सा सीधे रास्ते पे चलते चलते अपने सीधे हाथ की तरफ चले जाएंगे तो आप खाई में गिर जाएंगे. And then if you go a little bit to the left off of your path, then you will fall on the rocks. और उल्टे हाथ पर पत्थर पड़े हुए हैं, वहां गिरेंगे तो भी आप जख्मी हो जाएंगे. That is the example Imam used after telling us, do not follow or listen to or observe or read their books on the Hindu side and on the Ishnashri side, because those were the two examples Imam had given above. Because each side will hurt you. Sirat al-Mustaqim is a straight path. Follow your tariqa. That's what the bottom line was. आखिर में जो सिखाना था, जो फरमान था, वो ये था कि अपने सच्चे रास्ते पर चलो. आखिरी पैराग्राफ में मौला फरमाते हैं कि वो लोग जो आपको दूसरे मजहब के चीजें सिखाने के लिए आते हैं, वो कहीं दूर से और बाहर से नहीं आते हैं. लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. आप ध्यान से सुने इस बात को कि वो लोग जो आपको हिंदू मजहब की बातें सिखाते हैं, तो कोई हिंदू आकर आपको जमात खाने में हिंदू मजहब की बातें नहीं सिखाते हैं. और जो आपको इश्नाश्री तरीके पर चलाने के लिए या सुन्नी के तरीके पर चलाने के लिए आते हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं. वो आप ही के तरीके के अंदर, आप ही के दोस्त, आप ही के भाई बहन, आप जैसे ही दिखने वाले लोग होते हैं. वो शक्ल और सूरत से इंसान, और हो सकता है कि वो अपने आप को इस्माइली भी बोलता हो, लेकिन उसके दिल के अंदर एक शैतान छुपा हुआ है, एक बुराई छुपी हुई है. They may look just like you, a human. He or she may be calling themselves Ismailis,
But if they are not keeping you on Sirat al-Mustaqim and they are teaching you and try to tell you what is wrong in Ismaili Tariqa and why you should not follow Ismaili Tariqa, they are taking you away from the Sirat al-Mustaqim. Then they are a human like, maybe a friend like, maybe so-called Ismaili, but they are actually taking you away from this Sirat al-Mustaqim. Because in their heart, they are not Ismaili. So Imam says, be careful. Look what Imam Sadruddin have said to you. पर नाते व्यवहार ना कीजिए. What does it mean? Do not associate yourself with others from outside. Now we do business, we do work, we do go to schools with other people, but when it comes to our tariqah, when it comes to our iman, when it comes to our soul, we do not associate that with anyone from outside. We keep our iman as the most expensive jewelry in your box. आप अपने ईमान को सबसे कीमती हीरा माने और कभी भी इस हीरे को किसी को दिखाए ना. अपने ईमान को एक बहुत ही बड़ी दौलत समझें और उसको अच्छी तरह से बैंक में बंद करके रखें कि कोई लूट ना ले. That's how you should safeguard your faith, your iman. Inshallah, let's come to Farman number 43. Hazrat Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salawatullah Alaihi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad फरमाते हैं, हजरत रसूल करीम दुनिया में तशरीफ लाए और दुनिया में इस्लाम फैलाया. वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थे. जिस तरह हिदायत फरमाई उस पर चलना चाहिए. रसूल ने जो फरमाया वो करो. ये काम करना है और वो काम नहीं करना है. और रसूल के मना किए हुए काम तुम करो तब आखिरत में क्या जवाब दोगे. यहाँ पर I would like to draw your attention to the two facts. One, there are शरीयत इलाही, हमारे आसान लैंग्वेज में उसको असूल दीन कहते हैं. असूल दीन, the principal fundamental things of a religion. Asul Deen. All the prophet from the Adam to the Khatam, जितने भी रसूल, नबी, पैगंबर, अंबिया व औलिया तशरीफ लाए, उन तमाम ने इंसानों को, और तमाम इंसानों को, ऐसा नहीं था कि मूसा ने सिर्फ जूइश लोगों को सिखाया, ईसा ने सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को सिखाया, मोहम्मद ने सिर्फ मुसलमानों को सिखाया. ऐसा नहीं है. वो तो रहमतुल आलमीन होते थे.
they came with the message for all the humanity. And their message was simple. And it based on Asule Deen, the fundamental principle of the religion. And what are those? Number one, be good. सबसे पहले इंसान बन के रहें. Be good to each other. Then follow Allah. Then follow Rasul. Then follow ulil amr minkum. यानी कि ये असूल पहले दिन से रखा गया कि हर हमेशा खुदा के फरमान यानी कि असूल दीन पर चलो जो रसूल तुमको देते हैं और जो रसूल के बाद इमाम तुमको देते हैं. I mean, look at this fundamental principle of religion. So simple. So simple. Because we are nobody and we cannot receive the direct guidance from Allah. If that was the case, Allah would not have appointed Adam, Hazrat Noah, Ale Ibrahim and Ale Ibrahim, Imran and Ale Imran. He would have not given us the prophets one after another, 124,000, and he would not have given us the Imam today. If we could have received direct guidance from him, why 124,000 prophets? Why? Because we are not able. Our example is the soul, जिसको हम कहते हैं रूए गरीजी, अकले गरीजी, रूए सिफली. We are at the lower end when it comes to soul, and we are a needy intellect when it comes to our mind, brain. Our reach is not with Allah. So Allah being Rahman and Rahim, चूंकि हमारी डायरेक्ट पहुंच वहां तक नहीं है, हमारी रूह का सिरा निचले है और हमारी अक्ल अक्ले गरीजी है, जरूरतमंद है, तो खुदावन ताला ने हर जमाने में हमारे लिए रसूल, हिदायत और इमाम को रखा. जो भी नाम हो, आप उसको रसूल कहें, पैगंबर कहें, नातिकीन कहें, ओलिया कहें, अंबिया कहें, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए एक जरिया मुहैया फरमाया, यानी कि हमको रास्ता दिखाने के लिए, to show us the right path and keep us on the right path, to take us back to our asal. He appointed in every time and age a guide. Every time. So we may stay on Sirat al-Mustaqim. And they are the guide for all. I will use an example for your understanding. How can we say Imam is Imamul Nas? How can we say Imam is for all? When Imam only gives Farman to Ismailis.
The example of the Imam today, an example of the prophets back in their respected time, is the example of a son. आज इमाम बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे इस्माइलियों का इमाम है और इस्माइलियों को फरमान देता है, लेकिन दर हकीकत में ये बात दुरुस्त नहीं है। इमाम तमाम लोगों का इमाम होता है और रसूल अपने जमाने में तमाम लोगों के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए थे। They were the guide for all. And the example I was about to give is the example of a sun. क्या एग्जाम्पल है? एक सूरज की, कि जब सूरज सुबह को बाहर निकलता है आसमान पर, when sun rises in the heavens in the morning, it equally gives light to all. It does not discriminate. Okay, this is Ismaili, this is Muslim, this is Christian, this is Jewish, this is Hindu, this is Buddhist. No, sun does not discriminate. That is the example of the Prophet and Imams. Without any discrimination, they come to this world to guide all. But if someone does not want sunlight or the heat of the sun, then they have a free will not to do so. They have a free will not to do so. Just like that, Imam are Imamul Nas for all, prophets were prophets for all the people. So Imam says, he came to guide you. And whatever guidance he gave, you should follow. If that is true, then whatever guidance the Imam gives, you should follow. Because guidance is according to the time and place. Time and place. So the guidance of Hazrat Adam was different than guidance of Hazrat Noah, because time and place had changed. Same with Ibrahim, same with Musa, same with Isa, and same with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in every prophet and imam time, guidance is according to the time and space. So in other words, this Farman is telling us to follow the guide of the time. And whatever they say, do that. And whatever they say not to do not do it. क्या ये बात तमाम लोगों को इस एक छोटी 2-3 लाइन के अंदर आसानी से समझ में आ गई? तो यहाँ पर कितना सिंपल एक फरमान हमारे लिए दिया गया। फरमान 100 साल पुराना है। This Farman is over 100-year old. But look at how relevant this Farman is even today. People argue for the sake of argument that we must follow Prophet Muhammad as he has guided us 1400 years ago. Then the argument should be, well, Hazrat Isa also had guided us 2000 years ago. And Musa had guided us 2000 years ago, 3000 years ago. No, we supposed to and must follow the guide, the Imam of the time. That is the principle, fundamental principle. असूल दीन यही है कि आप इमाम को, और जो भी आपके जमाने में, अगर आप रसूल के जमाने में होते
तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त होती कि जो उन्होंने फरमाया वो करें आप, और आज भी हम कर रहे हैं। जो जो खुदावन ताला की तरफ से रसूलों ने फरमाया, असूल दीन, और जो इमामों ने फरमाया अपने अपने वक्त के अंदर। मुला फरमाते हैं कि अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे, आखिरत में क्या जवाब देंगे। दुनिया में इंसान ज्यादा से ज्यादा 100 बरस जिंदा रहेगा। जवान और बूढ़े सबको मरना है। इसके बाद क्यामत है। क्यामत में 1 घंटा 1000 बरस जितना होगा। वहां तुम क्या करोगे? वहां तुम क्या करोगे? Everyone would have to die. What would you do there? How will you answer? When you will be asked, did we not send a guide to you? What excuse will we as a smiley will have? जब हमसे पूछा जाएगा कि क्या हमने आपकी तरफ एक हादी को नहीं भेजा था, तब आप क्या जवाब देंगे? The next half of the paragraph, Kamra Sahib, can you move your English section part to the next page? Thank you. A little bit further up. Thank you. The next part is regarding some drugs and how human should stay away from the drug. इमाम उस जमाने के हिसाब से जो इश्यूज से, ओपियम के इश्यूज, उसके बारे में फरमान फरमाते हैं कि आप ड्रग्स और हर उन चीजों से दूर रहें जो आपकी रूह को और आपके ईमान को, आपकी अक्ल को खराब करती है। Stay away from all of those bad habits which will take you away from the Sirat al-Mustaqim, is not good for your soul and is not good for your mind. Because if your mind is not working due to the drugs, how will you understand and follow? You are welcome to read this part on your own, but Imam say it is haram, is absolutely forbidden for Ismailis to use drugs. Further, Mullah says, Mullah talks about some music further. Now, this is the surprising part to some of us, but if you listen to it and read this very carefully, Imam is not saying the music is forbidden, but don't just follow that and waste your time. And don't waste your time. That is what Mullah is saying. So listen to this. I'm going to go ahead and read this for you. तुम में से बहुत से लोग गाने बजाने को खुशी समझते हैं और गाने बजाने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये अच्छा नहीं है। You understand? Music is not bad, but wasting your time on that is not good. Music itself is not bad. Music itself is not bad. And Mullah further says, if you are going somewhere and you hear the nice music, that is not forbidden and there's nothing wrong with it. लेकिन उसकी तरफ दौड़ पड़ना,
just wasting your time after the worldly entertainment. It comes to the bottom line was they're wasting time in the worldly entertainment is not good because it really harms you. If you don't believe me, try it. Listen to a music, the one you love it, for an hour or two. That music will run in your head all the time. It will constantly run. The song will constantly ring in your hair, in your head, in your heart, constantly. Now take the same example. If you take your favorite tasbih, zikr, for hour or two, that will also run in your head constantly. Remembrance will take you on the high, will give you the high status. The song and music will not. Again, the music itself is not a bad thing, but wasting your time on that is the bad thing. आप समझ गए कि किस तरह से इमाम ने इसको डिफाइन किया है कि अगर वही एक्शन को अगर आप अपने जिक्र और फिक्र में रखते हैं तो वो आपको काम आएगा, अदरवाइज वो आपको नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर नुकसान का जो ताल्लुक है, यानी कि हमारा वक्त के जाया करने का जो ताल्लुक है, उसके बारे में इमाम हमें समझा रहे हैं। And then Imam talks about the sharab, alcohol is also not good because it destroys your mind and your heart. Imam in this next paragraph, तब ख्याल करो कि रसूल करीम ने क्या फरमाया. So when you think of what is good for you and what is bad for you, instantly think of what did Rasul said, what did Imam say. If you, before you use anything like that, or before we waste any time on anything, we should reflect back what did Prophet Muhammad taught us, what Imam has guided us. If we take that 1 minute of reflection, then you will see that what is good and what is not good, what is allowed and what is forbidden in Islam, in our tariqa. तब ख्याल करो कि रसूल करीम ने क्या फरमाया, उस पर चलो. दुनिया में जो लोग जना करते हैं वो हराम है. पैगंबर के वक्त में ऐसे लोगों को पहली मर्तबा मारा जाता था. Now Imam is talking about adultery. That adultery is not allowed in our religion, in our tariqa. And it would have a very bad consequences at the end. आखिर में उसका हशर बहुत ही खराब होने वाला है. Kamini sahib, would you move forward a little bit more, please? On both sides. Thank you. दुनिया में शराब, बंग, अफीम ये सब हराम है. दुनिया में शराब, बंग, अफीम खाओगे तो तुम्हें सख्त अजाब मिलेगा. लेकिन अगर डॉक्टर या हकीम दवा के तौर पर थोड़ा खाने के लिए कहे, उनके कहने के मुताबिक खाने में हर्ज नहीं.
Now this is please watch your phone and keep your phone on mute. Thank you. Imam says Imam says we must stay away from those things which is forbidden for us. But if those things are in your medicine, and if doctor prescribe the medicine, then there is nothing wrong with it. Do you see, our tariqa, our religion is not illogical. It's matter of fact very, very logical. Don't abuse alcohol, drugs. But then in our, even in cold medicine and some of the other medicine, you will find a small portion of alcohol or some kind of opium. If it is prescribed to you for whatever physical reason, then there is nothing wrong with it. जब खुदावन ताला तुम्हें जन्नत में जाने का हुक्म फरमाएंगे, तब किस तरह से छूट सकोगे? जन्नत से बाहर निकलने के लिए दरवाजा नहीं, तुम कहां भाग निकलोगे? हमेशा जन्नत का अजाब बर्दाश्त करना पड़ेगा। पैगंबर की मना हो वो काम ना करना, ताकि जन्नत में जाने से बच जाओ। What is this Jannam that Imam is scaring us off like a child? ये क्या जन्नम है जिससे इमाम हमको डराते हैं एक बच्चे की तरह? नाफरमान बरदारी is a hell, a darkness. Nafarman bardari is ignorancy. And ignorant is in hell today. And ignorant is not able to come out of its darkness, its ignorancy. Jahalat, नाफरमान बरदारी, इमाम को ना समझना, इमाम को ना पहचानना, इमाम से दूरी जन्नम है। और आप इस जन्नम से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि आपने खुद अपने आप को अंधेरे में बंद कर दिया है। आपने खुद अपने आप को जहालत की तरफ धकेल दिया है। ना फरमान बरदारी वही सबसे बड़ी जहालत और सबसे बड़ी दोज़ख है, और उससे बाहर निकलना मुश्किल है। Otherwise, Imam is Rahman and Rahim. Why would he send or allow his spiritual children, his loving, beloved spiritual children, to go to the hellfire? वरना इमाम तो रहमान और रहीम है। वो अपने रूहानी बच्चों को, जिसके लिए वो कहता है मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, वो क्यों उसको जन्नम की आग में डालेगा? नहीं, इमाम ये नहीं करता है। लेकिन जब हम अपनी खुद के हाथों से, अपनी फ्री विल से, when we decide to go on the wrong path away from Imam's Farman, we, with our own action, we fall into the darkness, into the path of ignorancy, away from the Imam
and away from the Imam's light and guidance, meaning we are in the darkness, in the ignorancy. In one of the event where Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salawatullah Alaihi, may our soul be sacrificed to the Imam, was present, someone said, those who do not recognize, who are ignorant of the recognition of Imam, will go to hell when they die. Imam corrected him by saying, those who are away from the recognition of the Imam, those who are ignorant are in the hell today. जब एक मर्तबा एक इवेंट के अंदर जहां पर इमाम मौजूद थे, किसी स्पीकर ने कहा कि वो लोग जो जाहिल है वो कल जन्नम में जाएंगे। मौला ने उसको करेक्ट किया, फरमाया आज जो लोग जाहिल है वो इसी वक्त जन्नम में है। तो यहाँ पर इमाम की दूरी को जहालत कहा गया। Let's try to finish this फरमान. Let's move up कमरे साहब little bit. लेकिन यहाँ पर पैगंबर ने फरमाया कि बहुत सी बातें तुम पर लाजिम है। एक अहम बात यह है कि अपने दीन भाइयों के साथ एक दिली से चलो। लेकिन यहाँ तो एक दूसरे की गिबत की जाती है। गिबत में जरा से भी ज्यादा गुनाह है। दीन भाइयों में आपस में फितना डालोगे, लड़ाई झगड़ा कराना ये कत्ल से भी ज्यादा गुनाह वाला काम है। तुम अपने दीन भाइयों की गिबत के खराब फल के लिए अभी नहीं सोचते, लेकिन आखिरत में याद आएगा। तुम अपने दीन में पहले सुई चुबो, अपने दिल में पहले सुई चुबो कर देखो। अगर तुम्हें तकलीफ महसूस होती है तो दूसरों को क्यों मारते हो? पहले अपने अमाल का ख्याल करके देखो। Let's talk about this part. And we have talked about this part many times before. Many times before. And what is that? Be one Jamaat. Become one heart. Do not backbite. Do not slander others. गीला गिबत से दूर रहो। एंड मौला फरमाते कि ये सबसे बड़ी हमारी बीमारी है। हमारे अंदर सबसे बड़ी जो बीमारी है, आज हमारे अंदर, हमारे जमात के अंदर आपको बहुत कम बुराइयां नजर आती है, बहुत कम बुराइयां नजर आती है, लेकिन एक बीमारी सबसे ज्यादा नजर आती है आज भी। एंड वी कैन बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ, इसमें कोई मसला नहीं है, सच बोलने में कोई मसला नहीं है। अगर आज हमको कहे कि आप बताओ कि आपकी जमात में सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी बुराई क्या है, तो मैं कहूंगा एक ही है, गीला गिबत, दूसरों को की बुराई करना, दूसरों को स्लेंडर करना, गॉसिपिंग। That's a huge setback for our Jamaat today. Only if we could remove according to the Ginan. जहां गीला गिबत था ત્યાં से उठीने ચાલવાનો. If you are true मोमिन, follower of the Imam, अगर आप पीर पूछीने चालो छो, अगर आप पीर के गिनान के फरमान इल्म के मुताबिक चलते हो और आप अपने आप को एक सच्चा इस्माइली कहते हैं,
तो इस बीमारी से दूर रहें। बी ब्रेव, बी ब्रेव, एक हिम्मत वाला इस्माइली बन के दिखाएं। जहां पर भी गिला गिबत होता है वहां से उठ के चले जाएं। याद रखें कि आपके माँ बाप, आपके दोस्त, जिसके लिए आप बोलते हैं कि वो मेरे माँ बाप है, मैं ऐसा किस तरह चले जाऊं, वो मेरे दोस्त है, मैं क्यों उठ के चले जाऊंगा, कल वो आपके साथ नहीं आने वाले हैं। आपका जवाब नहीं देने वाले हैं वो कल, जब आपसे पूछने में आएगा कि तुमने क्यों किसी की गिला गिबत की, किसी को सरेंडर किया। Why did you do backbiting? Why did you gossip? Why did you slander someone? You will not be able to say, because my mother was doing it, my brother was doing it, my children were doing it, how could I get up and go? आज चैलेंज है आपके लिए। अगर आप अपने आप को पक्का सच्चा इमाम का मुरीद कहते हैं तो हिम्मत से काम लें। आज हमारे अंदर ये बीमारी इतनी सख्त है हमारी जमात के अंदर, और ये सच्ची बात है, और सच्ची बात में कोई मसला नहीं है। आप सब मेरे गवाह हैं। All of you will agree with me that that is the one instantly illness we will find in our Jamaat. We are always looking for people's bad side, never looking for their good side. We are always are looking for excuses to criticize people, to backbite. If we take this one illness away from the Jamaat, we will be done. We will become angel. We will become angel. क्योंकि ये एक बीमारी ने हमारे अंदर बहुत ज्यादा खराबी पैदा कर दी है, और इसकी मिसाल ऐसी है जैसा आपने किसी को कत्ल कर दिया। जब आप किसी की बुराई करते हैं तो ऐसा है जैसा आपने किसी को कत्ल कर दिया। मौला फरमाते हैं आगे कि अगर आप ऐसा करोगे तो आखिरत में याद आएगा, तुम अपने बदन में पहले सुई चुभो। Just imagine when someone does bad deed for you, laugh at you, or make fun of you, or slander you, how do you feel? Then why are you doing this to others? You know you don't like that. If you don't like that, why are you doing this to others? पहले अपने अमाल का ख्याल करके देखो कि हमने कैसे गुनाह किए हैं, फिर दूसरों के गुनाहों को देखना। Look at yourself first before you slander someone else. Look at yourself. You know, I will end this with one time Hazrat Isa was with his companion walking somewhere, and he saw there were a bunch of Jewish people gathered with a rock in their hand. So when he stopped to see what was happening, they found a woman on the other side. So he inquired, "What are you all doing? And why do you have a rock in your hand?" They said, "This woman had done a bad deed, a sin. So we will throw the rock at her and eventually we will kill her." Hazrat Isa, very wise, very wise. He instantly said, "Very good, very good.
let me also pick up a rock. I think that is a great idea. Let's do that. And then he said, who will throw the first rock? How do we decide who's going to throw the first rock? And people said, well, you are the wise one. Tell us who should throw the first rock. And Isa said, the one who have never sinned will throw the first rock. आप समझ गए ये स्टोरी? एक मर्तबा ईसा जब एक जगह से गुजर रहे थे और देखा है कि एक हजूम है और लोगों ने हाथों में पत्थर उठाए हुए हैं। जब वो कतार को चीरते हुए आगे पहुंचे तो देखा वहां एक खातून खड़ी हुई है। लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है? कहा कि इस औरत ने गुनाह किया है, हम उसको पत्थर मार के संसार करेंगे। हजरत ईसा जो बहुत ही अक्लमंद और बहुत ही वाइज यानी के अच्छे सोचने वाले हकीम अक्लमंद शख्स है, उन्होंने फौरन से कहा ओ बहुत अच्छी आइडिया है, चलो ऐसा करते हैं, मैं भी एक पत्थर उठा लेता हूं, मैं भी उसको पत्थर मारूंगा। फिर पूछा कि हम में से सबसे पहला पत्थर कौन मारेगा? कौन डिसाइड करेगा कि पहला पत्थर कौन मारता है? लोगों ने कहा आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप हमारे तमाम के अंदर सबसे ज्यादा अक्लमंद और हकीम है। हजरत ईसा ने फरमाया, हम में से सबसे पहले वो पत्थर मारेगा जिसने कोई गुनाह ना किया हो। Who will throw the first rock? The one who have never sinned. Because if she has sinned and you are throwing rock at her, then who will throw the rock at her? The one who have never sinned, because we are all sinful. हम सब के अंदर कमी कोताही है. We all have some shortcomings. Then why are we slandering and gossiping and backbiting about others when we ourselves have so many flaws? Then why are we looking for other people's flaw? That is the lesson. कि जब हम सभी गुनहगार हैं, हम सब में कमी कोताही है, हम सब गुनहगार हैं, तो फिर हम दूसरों के गुनाहों को क्यों ढूंढते हैं और उनकी कमी कोताही के ऊपर क्यों नजर रखते हैं और उसकी बुराइयां क्यों करते हैं, जबकि हम खुद ही उसके अंदर शामिल हैं? तो कौन पहला पत्थर मारेगा? आपने देखा, ये था मोरल ऑफ द स्टोरी. इंशाल्लाह we will continue next week. Let me stop here on this note, and now if you have any comments or question, please do ask. Subhanallah, sir, Subhanallah. Friends, if you have any question, please share in the chat room. Sir, we have received a couple of questions. Friend asking, I'm a little confused. If wasting time on music is not a good thing, how should one react to the promotion of arts and music promoted by our current Imam? Are there types Very of good. music that are better? Very, very good. Don't be confused, my friend. Don't be confused. That's a good question. If you'll go back to the Farman again, do not waste your time on the music. Meaning, you have seen people, you know exactly who Imam is talking about, and we know exactly who those people are. Those who waste their entire time. What is the word? Entire time on the worldly music. Remember, there are many kind of music. Many kind of music. What about the spiritual music? There are ginans, there are kasidas,
there are other musical programs in our tariqah, in the Islam, in Christianity. Every religion has music encompassed into the religion. What about Dawood? Dawood was a big promoter of the spiritual soul music. The music itself is not wrong. And I believe I said it at least 3 to 4 times when I was reading the line on the Farman. Did you listen to me? Music itself is not a bad thing. Those worldly music which corrupts your heart and your soul, and I gave the example, and you can try it for yourself if you like. Take your favorite Bollywood song, just for example, okay? Or any English song, your favorite worldly, that has no ilm and no zikr. Take that and sing that for an hour or two. And you will notice now you are singing that all day long. When you sit in ibadat, when you sit in your dua, it will be rolling in your mind. Compared to that, if you are singing a ginan, a good music, art and music promoted by the imam and the institution are soothing for your soul. So know the difference between worldly music, which corrupts our heart and mind, and a good music. Because music is not bad. Music itself is not bad. So you must understand and you must see the difference between two. G. Sir, another question. Can you explain what does it mean that we will feel like it a needle in the akhirat, similar to they felt it when you gossip about that person? Does it Okay. mean I think someone had misunderstood that line also. It's not needle in the akhirat. How do you feel when someone slanders you? How do you feel when someone gossip about you or laugh at you? How do you feel? That was the example of a needle, my friend. That was the example of a needle. Sorry, I cut your question off because it was misunderstood. We have to read and pay attention and do not get yourself stuck in the example. Understand the meaning of those words. It is when someone slanders you, how do you feel? That is the example of a needle in your heart. G. so don't have any questions in the chat? Friends, if you have any question, please unmute your device. Any comments on the subject of gossiping and slandering and the disease and the illness that we have in our Jamaat, in our culture, in our families, in our friend groups? Any comments on that? Because the moral of the entire Farman was, at the bottom line was, that above all, even above killing someone, harming someone physically, the biggest illness was the illness of gossiping and slandering. How
and what are we doing to protect ourselves from this disease, from this illness? Any comments or question on that? Because that was the bottom line in today's session. या अली मदद Yeah, Ali Madad. अजीज भाई, जैसे ये जो आप बताए ना अभी, तो इसमें है ना कैसा होता है कि जब से ये इल्म क्लास में हम लोग मतलब मैं आई हूँ तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन बिल्कुल नहीं कर रही ऐसा नहीं हो पाता है। करने के बाद फिर रियलाइज होता है कि मैंने ये कर लिया, तो फिर मैं तौबा करती हूँ। लेकिन अभी जो आप बोले ना कि प्रोटेक्ट करना है इससे, तो इसके ऊपर आप थोड़ा प्लीज रोशनी डालो कि हमसे ये बिल्कुल भी ना हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी है। और नाचीज आपको कुछ एग्जाम्पल से सिखाएगा. So everyone understood my sister's concern. She did not have a question, but she had a concern that after coming into the ilmi understanding, we have this habit, this illness has reduced to a level, but still sometime हमको मसला होता है और हम उसके अंदर गिर जाते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज कर लेते हैं. That is a great thing to have, the realization. The sooner we realize, sooner we can ask for forgiveness. But doing it again and again and asking for forgiveness again and again, that is not good, right? Once we realize, when we ask for forgiveness, then we should not repeat. That's the whole idea. And that is her question. Not question, but concern. तो नाचीज आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता है, एंड मेरे ख्याल में मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी दी है, और वो पता क्या है? प्रैक्टिस. Let me tell you how this Garib and Nachiz practice this when I learned this. आपका जो अच्छा दोस्त हो ना, आपका अच्छा दोस्त आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, आपकी मदर भी हो सकती है, आपकी डॉटर भी हो सकती है. Practice this. Let me show you how did I overcome this. I have a very good friend who I speak to every day. Few years back, about 15-20 years ago, at the beginning of the Ilmi sessions, we would call each other every day, and normally we would talk about ilm. But as my sister said, sometimes we will fall into the trap. Human nature, right? We would start talking about him or her, whatever. So one day we decided, both of us, that if you say anything about anybody else, I will hang up the phone on you. And if I start gossiping, then you hang up the phone on me. And we will know exactly what happened. So we will stop ourselves right in the middle of it. And if we practice this for 2, 3, 4, 6, 7 times, guess what happened? After 2 times, after 3 times, after 4 times, we became so conscious that we would not do that anymore. So what happened at the end? What was the inam? उसका क्या इनाम मिला पता है आपको? कि हमारा पूरी कॉन्वर्सेशन, हमारा पूरा वक्त इल्म की तरफ चले गया. क्योंकि अब जब हम फोन करते हैं तो इल्म की बातें करते हैं. अगर अब हम जब फोन करते हैं तो किस तरह से किसकी क्या मदद करनी है उसकी बात करते हैं. हमको क्या इल्म देना है, क्या इल्म लेना है, उसकी बात करते हैं. आज इल्म का कौन सा नुक्ता मुझे समझ में आया, उसकी बात करते हैं. So what did we do? We changed the conversation. We
change the conversation completely. Now, gossiping and slandering does not even come into our radar because we have no time for it. Our mind is not there. Let's say, और अभी भी ऐसा होता है कि हम जमात खाने में हैं, हम किसी के घर पे गए हुए हैं कि हर एक तो वो इल्म की बातें नहीं करता है ना, वो तो मेरे और मेरे दोस्त के बीच में था, मेरे और मेरे भाई के बीच में था. When this thing happen, when someone starts something, it's very easy. You know what we say? How about we talk about something other than this? Let's not talk about that. हमको उससे क्या लेना देना? हमको उससे क्या लेना देना? You know, there is an easy, mild, gentle way of putting it down. When you do this practice 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, you will notice that those who love to gossip and those who love to slander others, they will not do it in front of you. They will continue to do it, but they will not do it in front of you. And that's what you really wanted, it was, right? You wanted to safeguard your soul because you are responsible for your own soul. Practice. Bring it into the attention. Bring it to the forefront. Talk about it. Tell your friends, your family, that this is not acceptable. This is against Imam's Farman, so I will not do it. You may lose a friend or two. Let me warn you that. आप हो सकता है कि आपके एक दो दोस्त कम हो जाएंगे, लेकिन क्या आपको उन दोस्तों की जरूरत है जो आपको गुनाहों के अंदर और दोज़ख की तरफ ले जा रहा है? No, you don't need that friend anyway. You will lose a friend or two. You may lose your relationship with your relatives because they will see you as a boring person now. So that may happen too. But a moment is ready to give something to be on right path. क्या ये बात आपके लिए एक्सेप्टेबल है और ये सवाल का जवाब दुरुस्त है आपके लिए? हाँ बिल्कुल अजीज भाई, लेकिन इसमें मेरा एक और कंसर्न है कि ये तो समझो मतलब अपन बाहर का हो गया. जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं कि फैमिली में जैसे है ना, मेरे साथ कुछ गलत होता है ना, तो वो मेरे माइंड में रह जाता है. तो मेरे को लगता है कि वो सटल लेवल पे मैं गीबत कर ही रही हूँ, मतलब वो फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ. अगर मैं उसके बारे में सोचते रहती हूँ या फिर बच्चों के साथ शेयर कर देती हूँ, तो वो भी तो गिला गिबत हो गई ना. यस है, बिल्कुल है. तो क्या अगेन करना पड़ेगा हमको? प्रैक्टिस. ओके, हाँ ठीक है. समझ गया ना? हर लेवल पर बाहर ओके, पहले प्रैक्टिस होगी, फिर आस्ते 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 अंदर प्रैक्टिस होगी. या प्रैक्टिस इट्स द जर्नी, राइट? It cannot come overnight. It is the journey. So आपने अभी जो मिसाल दी ना कि किसी ने मेरे लिए कुछ खराब बोल दिया, मेरे को खराब लग गया. ऑफ कोर्स मेरा दिल है, मैं इंसान हूँ, तो मैं सोचूंगा क्यों इसने मेरे लिए ऐसा बोला. अब मेरे दिल में उसके लिए एक बुराई आ गई, राइट? तो मैं बोल सकता हूँ कि हो सकता है कि मेरे अंदर कोई कमी होगी तभी तो उसने मेरे लिए बुरा बोला. लेट मी फिक्स माई सेल्फ फर्स्ट. अब हमने अपना जो फोकस था ना उसकी तरफ से हटाकर अपनी तरफ कर दिया. प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. थैंक यू सो मच. शुक्रिया. इंशाल्लाह. जी जी, याली मदद. ओके, मैं ये पूछ रहा था कि अभी जो ये हो रहा है, वॉर हो रही है, there are so many people, refugees हो गए हैं, so many, and ये refugees को सबको मैं डरता हूँ. It is a pain in me. I really feel a pain. ओके, अभी जो कर रहा है उसका मेरे मगज में सोच आती है कि ये आदमी ये ऐसा क्यों कर रहा है. मैं इसको गाली निकालता हूँ, तो ये गिला गिबत है.
और I can't resist it because जब ये मैं देखता हूँ तो मुझे इतना पेन होता है कि मेरा भाई और बहन इतना सफर कर रहे हैं. So what should I do in such cases? Number one, stop watching news. So let's take it lightly. Let's take it a little bit lightly. The fact Okay. will still remain, isn't it? Even if I don't watch news, but fact Human is fact, nature. isn't it? Yes, I understand your question. Human nature, right? And feeling pain for our brother and sister, for the humanity, is a good attribution. Is a good attribution. Feeling pain for others is a good human attribution. So don't let that go, okay? But at the same time, and I will give example, I truly believe we learn through examples. I truly believe in that. So remember when few years back, our 45 Ismailis, our Jamati members, were murdered in one single incident in Karachi, Pakistan. From one single Jamaat Khana, one single Jamaat of Nurabad, I believe it was. They were riding in a single bus, 45 of them, male and female. They were murdered. All of them were killed. What did Imam guide us? What did Imam tell us to do? You know what Imam said? Do not think of anything bad. Do not cuss at them. Do not seek revenge. Pray. Pray for them. Pray for them. Somebody is saying Al-Azhar Society. Thank you. Al-Azhar Society, not Nurabad. Thank you. Feel pain. Pray for them. Focus on the goodness, because your prayers will ease their pain. Your cussing will not help anyone. Matter of fact, will harm you and you only. When you cuss at someone, it does not harm them. It will not do anything for them when you cuss at them or when you think bad of them. I'm not Allah, I'm not Imam, I don't believe I'm anyone judge. How about we leave the judgment to Allah and the Imam? Let the judgment belong to them. Let them have it. And how about we do what Imam said in this incident? Pray for them. Pray for them. Focus on the goodness, praying. How about we focus how all the people of the world is helping them today? All the people of the world are behind them today and helping them, giving them refugee, giving them food, settling them down, giving them medicine, helping them. How about we focus on that side, the goodness side? That's how you handle this kind of situation. I hope this example and this understanding will ease your mind. I'm with you, my brother. We must feel the pain and we should feel the pain. That's a good human attribution to have. G. Okay, thank you so much. All right. Any other comments or question? Okay, if you don't have any other comments or question, we can stop here. Kamani Sahib? Geez, I think so. There is a one question friend asked, but she clarifies this question a little bit more.
So actually she asked about how can we escape all this doing Jamati Seva, though we move away from it all. And she explained it a little bit more in there. That what I meant to ask was how can we avoid being sucked into a leadership position? Seva should be work, no words. Real good Sevadaris get slandered too. Okay, sounds Yeah. like So a statement, not a question. yeah, I think she's asking about that. You know, people in the leadership position, they are being slandered. You know. I don't understand question. अगर वो उसको को सिलेंडर करता है तो उसको क्या फर्क पड़ता है? Right. इसको And कोई फर्क नहीं पड़ता है. I'm sorry, I'm not able to understand the question. Okay, so don't have any questions anymore. Okay, in that case, remember we're gonna continue our session on Ramadan and Roza tomorrow morning, inshallah. See you all in the morning. Thank you, everybody. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. या अली मदद मौला सुखी सलामत आबाद रखे Ameen. बहुत अच्छी नॉलेज मिली मौला हमको गिला गिबत से बचाए मैं बहुत दुआ करती हूँ सर आपको दिन और दुनिया में असर मिले सुखी सलामत आबाद रहो Ameen. 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 We Ya Ali really Madad. enjoyed it. Ya Ali Madad. Thank Ya you, Ali Ya Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ali Madad. Ya Ali Madad. Thank you so much. Ya Ali Madad. Thank you. Ya Ali Madad. Thank you, Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Shukr, Mara. Shukr alhamdulillah. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Dale.